Hello, my dear students. Here we will be doing Unit 1 for PPS and will be covering block diagram of computer along with all the details. So let's start with Unit 1. What is a computer? A computer is an electronic data processing device which accepts and stores data input, processes the data input and generates the output in a required format. So basically कंप्यूटर हमारा क्या होता है, जो डेटा लेता है देन उसको स्टोर करता है, देन प्रोसेसेस द डेटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड देन उसको कन्वर्ट करने के बाद एक आउटपुट में क्रिएट करता है एंड ऑल द 4 steps आर कंट्रोल्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड CPU, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, सो बेसिक कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट ALU. सो हम सबको वन बाय वन देखेंगे, बट बिफोर दैट ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूजर ने इनपुट दिया, देन इट गोज टू द CPU. CPU के अंदर क्या है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, एंड देन after processing the data the output is given to the user. So ये है आपका block diagram of computer. So first is input unit. Input unit is a unit that accepts any input device and the input device is used to input data into the computer. Input unit क्या है, जो भी user से input computer में जाता है through an input device. इसका मेन फंक्शन क्या है? It converts inputted data into binary codes and sends data to main memory for computer. Okay, main memory of computer में ये data send कर देता है. Next है central processing unit, that's CPU. CPU is called the brain of the computer as it's an electronic circuitry that carries out the instructions given by a computer program. CPU हमारा मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो सारा फंक्शनिंग करता है एक कंप्यूटर में. सो उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट. कंट्रोल यूनिट क्या करती है, जो सारे उसके कंपोनेंट्स है, इंस्ट्रक्शंस, टेक्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी, उसको इंटरप्रेट करना, देन चेंजेस इनटू द सिग्नल्स टू एक्टिवेट अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. एवरीथिंग इज डन बाय द कंट्रोल यूनिट. बेसिकली ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट्स इनपुट, आउटपुट, मेमोरी एंड ऑल अदर यूनिट्स. ये काम होता है कंट्रोल यूनिट का. अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का क्या होता है? ऑल द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो भी हमारे डेटा पे प्रोसेस होते हैं वो हमारा ALU परफॉर्म करता है. एंड देन कम्स द मेमोरी यूनिट. मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट. प्रोसेसिंग से पहले भी जो डेटा स्टोर होता है वो मेमोरी यूनिट में होता है, प्रोसेसिंग के बाद भी जो डेटा स्टोर होता है वो मेमोरी यूनिट में होता है. ओके, देन कम्स टाइप्स ऑफ मेमोरी. हमारे पास 2 टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मेमोरी क्या होती है हमारी? इट इज द इंटरनल मेमोरी दैट स्टोर्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द CPU. इट इज अ वॉलेटाइल इन नेचर. डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज डिस्कनेक्टेड. प्राइमरी हमारी क्या होती है? इंटरनल मेमोरी होती है और वॉलेटाइल मेमोरी होती है विच इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज डिस्कनेक्टेड. सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी इज द permanent memory in which the data is stored permanently and we use some external storage device for this purpose, for example CD, DVD drives, etc. So basically memory हमारे पास 2 टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मेमोरी फर्दर 2 टाइप की होती है, रोम एंड रैम. रोम फर्दर 3 टाइप की होती है, पी रोम, पी रोम एंड ई प्रोम. रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम हमारे पास 2 टाइप की होती है, डी रैम एंड एस रैम. सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास 4 टाइप की होती है, HDD, SDD, ODD एंड USB फ्लैश ड्राइव. RAM stands for random access memory. It is a volatile memory used for temporary storage of data and instructions during program execution. इसका फंक्शन क्या होता है? Stores the working data and machine code
being actively used by the system. इसके दो टाइप होते हैं, डायनेमिक रैम एंड एस रैम, स्टैटिक रैम. डायनेमिक रैम क्या करता है, नीड्स कांस्टेंट रिफ्रेशिंग टू मेंटेन डेटा, कॉमनली यूज्ड इन पीसीज एंड लैपटॉप्स. स्टैटिक रैम क्या करता है, फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव, typically used for cache memory. Next we have is difference between DRAM and SRAM. In DRAM, data storage is in the form of capacitors, and in SRAM it is in the form of flashes or transistors. Speed is slower in case of DRAM but faster in case of SRAM. Power consumption is lower in case of DRAM and higher in case of SRAM. Cost is less expensive in case of DRAM and it's more expensive in case of SRAM. Density is higher in case of DRAM and lower in case of SRAM, and applications of DRAM is mainly in main memory, and where in SRAM its application is mainly for cache memory or high speed applications. And examples of usage of RAM is running applications and loading operating systems in a computer. Next we have is ROM, read only memory. It is a non-volatile memory that stores essential data permanently. Its main function is to contain firmware or system boot up instructions, that is BIOS settings. It is of three types: PROM, EPROM and EEPROM. PROM, programmable read-only memory. It can be written once, like any data can be written only once in the drive. Next is erasable programmable ROM. Data can be erased and reprogrammed using UV light. And in electrically erasable programmable ROM, EEPROM, data can be erased and reprogrammed electronically. Its examples of usage is system boot processes and embedded systems. Let's have a look at the difference between RAM and ROM. Data persistence: RAM is volatile, ROM is non-volatile. Data modification: in RAM, data can be read, written and modified, but in case of ROM, it can only be read. RAM is faster than ROM. RAM is more expensive than ROM. RAM is typically slower as compared to ROM. In RAM, data stored currently being used by the CPU. In case of ROM, it stores essential firmware and system information. Example of RAM is computer's working memory, and example of ROM is BIOS or boot code. RAM loses data when power is off. ROM retains data even when the power is off. Okay. So here are the main types of secondary storage devices in a computer. Magnetic storage devices. It includes hard disk drives, magnetic tape, solid state drives, USB flash drives, memory cards. Okay, so let's have a look at each one of them. Hard disk drives हमारी क्या होती है? Traditional storage devices with spinning platers and magnetic heads. It has high capacity but slower access speeds compared to SSDs, and they are relatively inexpensive. Next we have is magnetic tapes. It is sequential access storage used primarily for backups and archiving. It has very high capacity but slow access speed. Next is SSDs, solid state drives. They use flash memory to store data electronically. They are much faster read-write speeds than HDDs. They are more expensive, but prices are decreasing. USB flash drives, they are portable storage devices that use flash memory, small and convenient for transferring. Next is memory cards, used in cameras, phones and other devices. Various sizes and comes in various sizes and capacities. Next we have is optical storage. They are CD-ROMs, DVDs, Blu-rays, discs. It uses lasers to read and write data. CDs and DVDs are becoming less common, while Blu-ray is still used for high definition video. Next we have is cloud storage. Online storage devices like remote servers, for example Google Drive, are a type of secondary storage devices. Next we have is cache memory.
Cache memory is a small, high-speed memory located close to or within the CPU. It is a temporarily storage device that stores frequently accessed data to speed up the processing. Levels in cache memory: L1 cache, L2 cache, and L3 cache. L1 cache is the smallest and the fastest one embedded in the CPU. L2 cache is larger but slightly slower, located near the CPU, and L3 cache shared among CPU cores, larger than L1 and L2. Okay. Next we have the output unit. Output unit is a unit that constitutes a number of output devices so as to produce the result of processing or our output data. It accepts data or information, sends from main memory of the computer. It converts the binary coded information into high level language or inputted language. So this was the overall block diagram of computer with all the essential input output units.